Students, once you have noted down that for a real life data set, if you would have to check that how to check that whether certain discrete or continuous probability distributions in statistics, they are the good fit or they are not the good fit. So I have given you certain real life examples on which you have tested manually and you have applied the chi-square test to see that whether those distributions were the good fit or they were not the good fit onto certain real life data sets. Now you will be using the SPSS to test the chi-square goodness of fit. So for that purpose, first of all, we would be learning that how to define the variables and how to enter the data into SPSS software. Now students, the problem I'm quoting here is about a dice. Suppose a dice is rolled 30 times and the upper faces of the dice are observed. The observations are being given. Test at 5% level of significance that the proportion of 6 faces of the dice is same. Now students, first of all, you would have to open the SPSS software to make use of it so that you can apply the chi-square test for goodness of it. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट सबसे पहले हमें corresponding variables define करने होते हैं जिनको हम यूज करने जा रहे हैं. अब अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे आपके पास. पहला वेरिएबल था जिसमें आपको डाइस के अपर फेसेस मिल रहे थे और सेकंड वेरिएबल में फ्रीक्वेंसी गिवन थी. दैट मींस SPSS में हमने 2 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं. पहला है अपर फेस ऑफ द डाइस और दूसरा है उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. सो स्टूडेंट्स, जब आप SPSS का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको एक विंडो मिलती है. उस इंटरफेस विंडो में एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको 2 बटन्स मिलते हैं. एक होता है आपके पास डेटा व्यू और दूसरा है वेरिएबल व्यू. Once you will click onto the variable view, then this particular screen would appear before you. अब स्टूडेंट्स, यहाँ आपने क्या करना है, अंडर द नेम कॉलम जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, आपने 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं. पहला वेरिएबल मैंने टाइप किया है डाइस अंडरस्कोर अपर अंडरस्कोर फेस. अब स्टूडेंट्स, ये मैंने डायरेक्टली स्पेसेस के साथ क्यों सेपरेट नहीं किया डिफरेंट वर्ड्स को? रीजन दैट SPSS डोंट केटर फॉर दैट. SPSS में जब आपको 3 कंसेक्यूटिव वर्ड्स या 4 या 2 वर्ड्स साइमल्टेनियसली लिखने हो, एंटर करने हो, यू कैन सेपरेट देम बाय मींस ऑफ अंडरस्कोर. इवन द हाइफनेशन इज नॉट अलाउड. सो उसके बाद आपने इसकी टाइप ली है न्यूमेरिक और इसको एंटर करने के बाद स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट वेरिएबल जो डिफाइन करना था वो फ्रीक्वेंसी था. अब यहाँ पे मैंने वर्ड फ्रीक्वेंसी टाइप किया है अंडर द नेम और उसकी टाइप ली है मैंने न्यूमेरिक. अब अगर आप बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे देखिए तो स्टिल आई एम ऑन टू द वेरिएबल व्यू. सो जब भी आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, आप वेरिएबल व्यू पे क्लिक करने के बाद अपने वेरिएबल्स की डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे. अब इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए स्टूडेंट्स, यू हैव रिक्वायर्ड 2 वेरिएबल्स ओनली. वंस यू आर डन विद द डेफिनेशन ऑफ the 2 variables or the variables you are going to use under SPSS, further you will click on to the data view. अब स्टूडेंट्स, जब मैं डेटा व्यू पे क्लिक करूंगी तो एक और विंडो मेरे सामने अपीयर हो रही है. इस विंडो में अब हमारा डेटा रेडी है, वेरिएबल्स रेडी है ताकि हम इसमें डेटा एंटर कर सकें. सो द फर्स्ट वेरिएबल दैट वी हैव डिफाइंड वाज डाइस अपर फेसेस एंड द नेक्स्ट वेरिएबल वाज द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ देम. अब स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने डाइस अपर फेस के अंडर एंटर किया 1, देन मैंने टाइप किया 2, 3, 4, 5 एंड 6. Once I am done with that, I'll be moving on to the frequency variable. Frequency variable में मेरा जो पास डाइस के अपर फेसेस 1 के लिए फ्रीक्वेंसी थी that was 3. So मैंने 3 टाइप किया, उसके बाद मैंने 7 टाइप किया, then I've typed the next number, then next and till the last value that was the 3 frequency for the 6 value जिसमें आपका upper face of the dice is 6, उसकी last frequency थी 3. So students, this was the data requirement of the SPSS for chi-square goodness of fit test.